Hello students. Today we will continue with electricity, the most important part of this lesson, that is of resistance in series and parallel. Okay, that is the introduction of resistance in series and parallel was discussed in the last class. Okay, today we will discuss in detail. Actually, what is resistance in series? First we will discuss about the resistance in series. Now, what is this resistance in series while talking about? Okay, you can understand that here. Okay, when the resistors are connected. Now, resistors, you know that, okay, we are representing resistors like that. Okay, which resistors means which opposes the flow of current easily through it. That is called a resistors. Okay, now these resistors, that is as per the Ohm's law, we know that what is Ohm's law? It is V is equal to, okay, it is of V is equal to I upon R, correct? That is R is equal to V upon I. Okay, that is what actually the, okay, here we studied about the Ohm's law, correct? Okay, so resistance is equal to velocity, potential difference upon current passing through it. Now while telling about this resistance in series, now the resistors are, first the definition of the resistors in series. Resistors are connected one after another. Okay, it is, look the word one after another. Oh, you can say also end to end also you can say. Okay, resistors are connected end to end. Okay, that is one resistors are connected. Okay, at the end of the other resistor is connected, at the end other resistors are connected. Okay, this system is called the resistors in series. That is, the resistors are connected one after another. Now the next point you understand that when these resistors are connected in such a manner, the same current will pass through each resistance. The current passing through each resistor will be same. Okay, same current will pass through this. Okay, that is whatever the current produced by the cell or the battery, okay, that will be the current passing through the each resistance. That there will not be any difference in the current passing through it. Then what will change? Okay, now if we are connecting a voltmeter across these resistors, suppose I am going to give this as R1, okay, this is R2, okay, this is R2 and this is R3. Okay, now what I am doing is I am going to connect a voltmeter, okay, across the R1. Okay, here it is. So now here the not to consider. Okay, okay, now it is of complete. Okay, here must be one key must be there and voltmeter must be there. Sorry, ammeter must be there. Okay, so the plus and minus polarity must be like this. Now here, now for this R1, okay, now the potential difference across R1. Potential difference across R1 is of V1. Okay, like that. Now I am going to connect one voltmeter here. Okay, across R2. That is of V2. Okay, now I am going to connect one potential difference across R3. Okay, that is of V3. Understand? So that okay, the potential from these three voltmeters we will get the, okay, what the potential difference across these resistors. Now what I am going to do is, now I am going to do this point and this point as A and B. Oh, here it is. In the figure it is given X and Y. So it is of giving X and Y. Now what is the potential difference across X and Y? That is, we are going to connect one, okay, voltmeter like this across. That is by including all these together. Okay, it is called the equivalent, that is of V. Okay, suppose that the potential difference of this that is equivalent resistor, that is RS, we can say is of V. Getting? Okay, so now if it is like this, now in this case, okay, if we conduct an experiment of this, okay, that is we connected three resistors as in the diagram seen here. Okay, then what we are going to do is we are going to connect this voltmeter across each resistors. Okay, then we are going to, then we will get a V1 value across R1, value across R2 and value across R3. It is, suppose it is connected as, it is considered as V1, V2 and V3. Now the one value, that is we are getting across this equivalent resistance, that is the combination of three resistors together.
Okay, that is if it is of replaced by a single resistor. Okay, then that is of equivalent resistor when three resistors are connected in together, that is of Rs, that is of V. Okay, then through this experiment what we can understand here is, you can see that V is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, that is potential difference. Okay, the sum of the potential difference is equal to the equivalent potential difference, we can say, that is which is of X and Y. Understand? So that is very important. Got it this much? Okay, so what I am going to do is, now there I am going to change it. That is, now suppose now here by Ohm's law I am going to apply. By applying Ohm's law across the R1, it is of okay, what it is now, current remains same, so that V is equal to what it is here, I V1 is equal to I R1. Okay, Ohm's law. Now across R2, okay, it is of V2 is equal to I R2. Okay, now across R3 it is of V3 is equal to I R3. Okay, I think you understand it. Okay, now we are replaced the three resistor with a single resistance, that is of Rs. Okay, that is here it is connected here, and it is one resistor voltmeter is connected across these 2 points. Okay, that is what so it is combined to it. Okay, then that is of Rs. This is of V we are considering. That is the total. So V is equal to, why it is of I Rs. It is the Ohm's law is applied. Now experimentally we see that what we see, V is equal to V1 plus V2 plus V3. Sure. Now substituting this value, so that IRS is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. Okay, here you can see that, okay, I is same because same current is passing through the entire circuit. Now dividing I on both the side. Okay, therefore what you will get? You will get Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, this is the equivalent resistance. That is, when three resistors are connected in series, then the total resistance, that is equivalent resistance, is equal to the sum of the resistors connected. Understand? So Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. Getting all of you? Okay, so this is of the equivalent resistance. Now this is only the three resistors were connected. If we connecting n number of resistors, n number of resistors are connected, then it will become Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus etc plus Rn. That is, you can connect n number of resistors. Then also the equivalent resistance will be just adding these three resistors. So I hope you understand it. This is very important. It will come for the derivation. Now for the derivation, I will show you how to write. There the printed form is there. Now here, one more thing here it is. Now what exactly it is, how its application is. Now we are having three resistors, that is 3, 5 and 7. Now what will be the equivalent resistance when in these three resistors, that is one resistor is 3 ohm, other is of 5 ohm and other is of 7 ohm. When these three resistors are connected in parallel, series, when it is connected like this 3, 5 and 7, then if you want to replace it with a single resistance, then what will be the value of that resistor? That is, here the Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. That is, this is of 15 ohm. So that means, instead of using three resistors like this, we can use a single resistor of 15 ohm. Understand? That is the meaning of this. Now here some more value important thing you have to understand is, when we connected three resistors, the equivalent resistor is always greater than the individual resistors. Distinguish, it is very important. That means 15 is greater than 3, like that greater than 5 and greater than 6. That means this resistors in series is using to increase the resistance of the circuit. Understand? For example, we are having, it is with us only available 3, 5 and 7 ohms resistors. But in the circuit, we need a 15 ohm resistor. Then what to do is, you have to just connect these resistors in series, so you will get a 15 ohm.
Understand? Okay, like that. In order to increase the resistance of the circuit, what we are using, this series system is using. The other thing is, ओके दूसरा क्या है, अगर समझो इसको ये जो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर जो है उसको अगर डाउन करना है, करंट जो है ज्यादा नहीं पास कराना है. ओके अगर करंट को रिड्यूस करना है तो ओबियस रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो बस हो गया. सो दैट अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेगा तो ओके करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर जो है क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता. अंडरस्टैंड? Got all of you? So this system is using, first of all, what it is, RS, that is equivalent resistance in series is equal to sum of the individual resistors. Okay, that is R1, R2, R3 if only 3 resistors are connected. दूसरा जो है, okay, it is using to increase, the system is using to increase the resistance of the circuit. And तीसरा जो है, it helps to decrease the current passing through the circuit. Sure all of you? Okay, ये था रेसिस्टर्स इन सीरीज. अभी देखते हैं पैरेलल में क्या है. ये आपको लिख के लेना है आपको. ओके ये तो पूरा जो है डेरिवेशन या डायग्राम लिखना है और ये जो डेरिवेशन आपको लिखना है. पॉज करके आप ओके लिख सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो ये जो है तो आपको एग्जाम में आएगा. ओके विद नीट लेबल्ड डायग्राम. ओके डिराइव द एक्सप्रेशन व्हेन 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ऐसा क्वेश्चन होगा शायद से. समझा? तो आपको क्या करना है, ये रेसिस्टर्स जो है लिखना है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. इसका बेस्ड ये क्वेश्चन पक्का आएगा 100% ये क्वेश्चन इसका बेस्ड रहेगा. ओके और सम का नॉट ओनली वन, मेनी विल बी देयर. ओके इसका बेस्ड सम्स भी हो सकता है. ओके सो आप बहुत ध्यान देना है आपको. ये तो ये लिख लीजिए पॉज करके. ओके अपन आगे जाते हैं. अभी रेसिस्टर्स इन पैरेलल. अभी रेसिस्टर्स इन, अभी देखो उधर अपन क्या डेफिनेशन दिया था, रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर end to end in such a way that same current passing through it. Now इधर देखो when the resistors are connected between the 2 points. अभी इधर 2 common points लिया. ये 2 common points का बीच में अपन क्या कर रहे हैं, resistors को कनेक्ट कर रहे हैं. ओके 3 कॉमन पॉइंट का बीच में, दैट इज हियर. ओके एक्स एंड वाई. ये एक्स और वाई का बीच में मतलब सभी जो रेसिस्टर्स का एंड पॉइंट है किधर से ज्वाइन हो रहा है, एक्स और वाई में ज्वाइन हो रहा है. समझा कि नहीं? मगर उधर नहीं था, एंड टू एंड था. देखा इसका एक एंड का. अभी इधर एंड टू एंड नहीं है. इधर एक्स और वाई में सिर्फ एक का एंड है और दूसरा का था. इधर ऐसे नहीं, सभी रेसिस्टर्स का एंड पॉइंट्स किधर है, एक्स और वाई में ज्वाइन हो रहा है. तो ये जो है तो अभी देखा जाए तो आपको मालूम पड़ेगा ये पैरेलल में है. तो इसको क्या बोलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बोलता है. ओके अभी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसमें फर्क क्या है देखो. उधर अपन जो देखा था सेम करंट पासिंग थ्रू ईच रेसिस्टेंस था. तो इधर क्या है देखते हैं. ओके इधर अगर एक्स और वाई का बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस ये किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या रहेगा, सेम. मगर इधर एक डालेगा तो वो भी सेम रहेगा, इधर एक डालेगा तो ये भी सेम. मतलब ये सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कुछ फर्क नहीं रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि एन पॉइंट्स में है करके. बट एट द सेम टाइम अभी इसमें से एक करंट पास हो रहा है तो वोल्ट में इधर एक अमीटर रखेगा तो वी विल गेट द करंट पासिंग थ्रू इट. बराबर है? ये पॉजिटिव ओके और ये नेगेटिव. बराबर है? तो अभी इसमें से करंट पास हो रहा है, इधर सपोज आई करंट पास हो रहा है. अभी इधर आया तो इधर भी क्या कर रहा है, इधर अपन एक वापस एक अमीटर कनेक्ट कर रहा है. समझा? और इधर दूसरे एक अमीटर और इधर तीसरे एक अमीटर. देखा इधर जो अमीटर दिख रहा है ना, ऐसा सब में क्या कर रहे हैं, एक एक अमीटर क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं. तो ऐसा रहेगा तो तभी आपको मालूम पड़ेगा ये जो फर्स्ट इसमें जो करंट है इसमें एक करंट जो है I1 मतलब ये कुछ वैल्यू दिखाई देगा, इसमें जो है I2 कुछ अदर वैल्यू दिखाई देगा, इसमें जो है I3 कुछ अदर वैल्यू दिखाई देगा. समझा? मतलब उसमें जो सीरीज में जैसा V1 V2 V3 था, इधर तो सब जगह V सेम है, मगर इधर क्या चेंज हो रहा है, इधर करंट जो है वो चेंज हो रहा है. ओके इसमें I1 हो रहा है, इसमें I2 हो रहा है, इसमें I3 मतलब अलग हो रहा है. तो मगर टोटल करंट क्या है, I है. तो जब भी ये एक्सपीरियंस करने का टाइम अपन ये समझ में आएगा कि इधर भी क्या है करके, ये जो I जो है मतलब टोटल करंट इन द सर्क्यूट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है करके. मतलब ये तीनों का जो करंट का जो सम में वो क्या रहेगा, ये जो अमीटर का जो करंट रहेगा टोटल करंट इन द सर्क्यूट रहेगा. ठीक है, समझ में आया आपको? ओके दिस वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ओके मैं वापस अभी ओम्स लॉ अप्लाई करने जा रहा है. अभी आपको समझा रहेगा क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करके. बराबर? अभी देखो ये जो अभी I1 ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, इट इज ऑफ V अपॉन I इज इक्वल टू R. सो दैट इधर I
ओके आई क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी कैन से V अपॉन इट इज RP. ओके RP मींस रेजिस्टर्स इन पैरेलल इक्विवेलेंट, मतलब ये तीनों को क्या है निकाल के अपन एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो RP हो गया, समझा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बोलते हैं. नो I1 क्या रहेगा, फिर I1 बोले तो V अपॉन R1 रहेगा क्योंकि V तो किसमें चेंज नहीं हो रहा. ओके नो I2 क्या रहेगा, I2 बोलेगा तो V अपॉन R2 रहेगा. ओके और I2 ओके और I3 क्या रहेगा, I3 बोलेगा तो V अपॉन R3 रहेगा. तो अभी अपन ने ऑलरेडी जो देखा इसमें जो इक्वेशन 1 में अपन ये जो वैल्यू ओम्स लॉ के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेगा तो V अपॉन RP इज इक्वल टू ओके V अपॉन R1 ओके प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 है, बराबर है कि नहीं. ओके अभी देखो डिवाइडिंग क्या कर रहे हैं, V को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. मतलब इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान दो. ओके इधर जो है रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, उधर तो डायरेक्ट सम बोल दिया था, इधर रेसिप्रोकल बोलना पड़ेगा. रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. मतलब सबका रेसिप्रोकल करके उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, समझेगा नहीं. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ओके ये भी अभी देखो इसका जो रियलिटी में अपन थोड़ा चेक करते हैं इसका एप्लीकेशन कैसा है और ये सब कैसा है करके. ओके तो अभी देखो अभी अपने पास 3 रेसिस्टर्स है, ठीक है, दैट इज ऑफ ओके 3 ओम का एक रेसिस्टर है और 6 ओम का एक है और 9 ओम का एक है, ऐसा 3 रेसिस्टर्स है. ओके समझा कि नहीं. अभी ये तीनों रेसिस्टेंस मतलब इसको अपन क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया. ओके इधर 3 ओम इधर 6 ओम और इधर 9 ओम. अभी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए. अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 1 अपॉन RP रहेगा. सो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू इधर क्या है 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 9, बराबर है कि नहीं. तो अभी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले तो क्या करना पड़ेगा, देखो उसका जैसा डायरेक्ट ऐड तो नहीं करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द एलसीएम इज 18, बराबर है. सो 18 और इधर क्या रहेगा, 18 के लिए 6 करना पड़ेगा प्लस इधर क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा. ओके और इधर क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, बराबर है. सो क्या हो गया, ये जो हो गया. अभी ऐड करा तो क्या मिलते हैं आपको, इट इज 11 मिलते हैं, तो 11 अपॉन 80. ओके अभी देखो सो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 11 अपॉन 80. सो व्हाट इज RP इज इक्वल टू, दोनों टेकिंग रेसिप्रोकल. ओके मतलब इन्वर्टेंडो बोलते हैं इसको. ओके दैट इज 18 अपॉन 11. अभी 18 अपॉन 11 बोले तो क्या मिलेगा आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1.7 दैट इज 7 1.6, बराबर. तो आपको 1.6 देखो ओम. ओके 6 एक्सा चेंज होएगा, इट इज आई मैं सिर्फ 6 ले रहा हूं, नॉट एक्सैक्टली 6. ओके और पॉइंट आगे जाएगा. अभी देखो अभी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, देखो अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिला 1.6 मिला. ओके मगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना था, 3 ओम था, 6 ओम था, 9 ओम था. तो अभी ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर देखा जाएगा तो ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है क्या है, कम में है क्या नहीं. देखो उधर क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा था, मगर इधर जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या है, कम है. तो इससे अपन को क्या कंक्लूड कर सकता, अगर अपना पास 3 रेसिस्टर्स है और अगर एक सर्क्यूट में वो जो गिवन रेसिस्टर से कम रेसिस्टर करना है, ओके मतलब डिक्रीज करना है, तो क्या करो उसको निकाल के पैरेलल कनेक्ट करो, तो क्या हो गया रेसिस्टेंस क्या हो गया, कम हो जाएगा. अंडरस्टैंड. ओके सो दैट इज व्हाट इट मीन. आए समझ में. सो हियर द इंडिविजुअल दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. उधर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था, मगर पैरेलल में कनेक्ट करने के टाइम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेगा तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कभी भी क्या रहेगा, कम रहेगा. तो मतलब अभी इसका अभी ज्यादातर अगर एक मतलब आपको बाद में चलते एक ऑब्जेक्टिव्स में मतलब 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड दिया ऐसा 3 ओके 5 7 ओके ये इसको पैरेलल में ये पैरेलल में कनेक्ट किया. ओके तो एक वैल्यू नीचे दिया, उसमें एक वैल्यू दिया कि 2 ओके 4 10 और इट इज ऑफ 50. ओके ऐसा दिया तो इसका जो है कैलकुलेट करके आपको करना पड़ेगा कि डायरेक्ट फाइंड करेगा इसका आंसर. क्वेश्चन समझा. ये बोला कि
3 रेसिस्टर्स 3 ओम 5 ओम एंड 7 इसको पैरेलल कनेक्ट किया, ओके तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? तो आंसर में ये दिया है ऑब्जेक्टिव्स में 2, 4, 5 एंड 10, 15। तो क्या रहेगा इसका आंसर? यस नहीं मिला कि नहीं? 4 रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अरे यार इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। तो ये जो पैरेलल में कनेक्ट किया तो सबसे छोटा जो है उससे भी छोटा रहेगा, इसका मतलब 2 आंसर रहेगा। दैट इज इट इज नॉट द एक्सैक्टली नहीं है, मैं ऐसा ही आपको एक एग्जांपल बता। तो दूसरे तीनों वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि वो तीनों वैल्यू छोटा से बड़ा है, इसलिए अंडरस्टैंड। सो लाइक दैट ओके रेसिस्टेंस। नाउ ये जो रेसिस्टेंस इन सीरीज यूज काय के लिए करता, तो एक्चुअली अभी आपको समझा रहेगा। रेसिस्टेंस जो है अगर एक सर्क्यूट में जो सर्क्यूट का अगर रेसिस्टेंस कम करना है तो ये अपने पास 3 ओम है, 6 ओम है और 9 ओम है, मगर उसमें चाहिए सिर्फ 2 ओम का, तो क्या करो उसको निकाल के पैरेलल कनेक्ट करो, हो जाएगा। गेटिंग? समझे कि नहीं? सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्क्यूट। ओके नाउ दूसरा, अगर सर्क्यूट में रेसिस्टेंस कम हो गया तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली क्या बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज द ओके करंट इन द सर्क्यूट। ये आपको इतना ध्यान में रखना है, ओके ध्यान देना इसमें। Okay, you read the textbook very well. Okay, and very important. And you have to okay expression. ये भी सेम पहला जैसा ही इसका भी क्या आएगा? विथ नीट लेवल डायग्राम आपको पूछेगा कि क्या है करके इसका डिराइव करो करके। सो हट आपको ये पढ़ना है पक्का, श्योर करेगा। यू विल रीड द टेक्स्ट बुक वेल, यू विल ओके इसको 2-3 टाइम आप प्रैक्टिस करो। यह जो रेसिस्टर द एक्सप्रेशन फॉर द रेसिस्टर्स इन पैरेलल सीरीज जो है आपको बहुत बार प्रैक्टिस करो और पक्का एक क्वेश्चन है। वन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन आ सकता, दूसरा जो है सम्स में आ सकता, और एक है दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, दैट इज योर रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके उसका भी ओके वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो प्लीज राइट डाउन ऑल दिस आंसर्स एंड प्रैक्टिस इट वेल। ओके सो फॉर टुडे इट्स इनफ, बाय, हैव अ नाइस डे।